हाँ गाइस, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। जीरो, अरे अरे एक सेकंड रुको, मुझे रुको तो सही, अभी आ रहे हैं साउंड, इसको बंद करना पड़ेगा ना। हम्म Enable color blend. color blend, Enable menu narration. चुप, ये हो गया था, ये हो गया। प्रोसीड, लेट्स गो गाइस। गाइस आज हम खेलने वाले ये बहुत ही बढ़िया गेम, और भाई आयुष भाई को थैंक यू, क्योंकि आयुष भाई की वजह से ये गेम हमें मिल पाया। Fire, flint, और गेम अच्छी है, language, बट पूरी इंस्टॉल नहीं हुई है, machines. पीछे इंस्टॉल हो रही है अभी गेम। In the face कैसे हो of गाइस, टेरर भाई crises, कैसे हो? humanity adapted. We became सीन आपका warriors, नोज में आ गया, आ explorers, गया आ गया। builders. गाइस एंजॉय करो, ये नया Dreams गेम है जो flying अभी ही forward. रिलीज हुआ था कुछ टाइम पहले, न्यूली रिलीज Control गेम है the गाइस। changing world. बहुत अच्छी गेम है ये, थोड़ी सी मैंने खेली, मुझे अच्छी लगी, अभी इंस्टॉल चल रही है, बहुत बड़ी गेम है। मैं चाहता था गाइस कि थोड़ा सा मैं वैलोरेंट से दूर हो जाऊं, वैलोरेंट बहुत देर से खेल रहा था, बहुत टाइम से मैं थोड़ा दूर होना चाहता था इसीलिए। I'm old enough और to टेरर remember भाई what that जल्दी world से used ऊपर to वाला be मैसेज like. पढ़ो और याद रखो। हाँ We मैंने had देख लिया वो places we स्पोर्ट्स belong. पर्सन वाला, स्पोर्ट्स टीचर वाला Country, देखिए मैं। community, टेरर भाई मजे ले लो। family. और टेरर भाई ये नया वाला डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो यार, अगर नहीं किया है तो ऊपर एक लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लो यार। One failed state गाइस ये became गेम a बहुत अच्छा dozen, है। and अच्छा now ये एक there's ऑनलाइन millions मल्टीप्लेयर गेम है, of स्टोरी मोड तो नहीं refugees है, headed बट every मल्टीप्लेयर ऐसा नहीं direction, है कि जैसे except home. लाइक इट्स We call ourselves टीम बीटी, nomads, like the non-patriotic, बिल्कुल, अरे stateless good warriors fighting for our survival. बहुत अच्छी गेम है यार ये, बहुत। थैंक यू Caught आयुष भाई फॉर दिस लवली गेम। between the last two superpowers as they circle each other, fighting for resources, सीरियसली बस मेरे पास है threatening to नहीं draw है, us into a मतलब थी new नहीं kind of अब war. है। Blackout event has occurred. That has disrupted electronic communication across the planet. We don't know what has happened. Are we broadcasting? Are we on air? Communications and navigation systems leading to गेम बहुत अच्छी है, ग्राफिक्स बहुत सही है इसके, गेम Russia and the United States खेलने लायक गेम pointing है। fingers, escalating tensions between the nations to fever pitch. The war between the और मैं बता दूं बैटलफील्ड का बहुत बड़ा फैन भी हूँ We're एक तरह headed से। to Doha to keep an American satellite from falling into Russian hands. दोहा And the intel on board is all the excuse either side needs to send us straight to hell. But we faced crises before. The nomads were born out of it. We are the warriors. We are the adaptation. And this fight is ours. लेट्स गो। Listen up. I only have time to explain this once. Inside the combat zone, there are two opposing armies fighting to gain and ओ सॉरी, ये कितना बाकी है वैसे बाय द वे? इट्स 2 और 13 मिनट्स मोर टू गो। fight continues until one side runs out of reinforcements and is forced to withdraw. That's go. it. Now, how do you gain sectors? You gain a sector by securing the objectives inside. To secure an objective, clear it of all hostiles. Once one side holds all the objectives inside a sector, it's theirs. Holding more sectors than the enemy causes them to bleed reinforcements. You bleed the other team to zero, and it's over. You take the field. Sure, you can light up hostiles and whittle down enemy reinforcements, but matches are won or lost by capturing sectors. Eyes on the prize, people. Move out! ओके लेट्स गो। तो गाइस हमारे बीच में लड़ाई होंगी यूएस और रशिया के लोगों के बीच में, मतलब लाइक सामने 4 प्लेयर्स होंगे, हमारे टीम पे 4 प्लेयर्स होंगे इंक्लूडिंग मी। एंड देन हमें क्या करना है, बेसिकली हमें उनको मारना है और एक सेक्टर को अपने नाम पे करना है। लाइक जितने ज्यादा सेक्टर्स उस एरिया के हमारे नाम पे होंगे उतना हम जीतते चले जाएंगे। तो ऐसे है ये गेम, मतलब समझ रहे हो, लाइक टीम बेस्ड गेम है, जैसे टीडीएम वगैरह नहीं होते हैं वैसे ही ऑलमोस्ट सेम। ठीक है,
इसमें क्या करना है आपको लिटरली सामने वाली टीम से सेक्टर्स को चुराना है. Let's go. Heads up! You contacts! U.S. forces in the vicinity! Wow. Let's go. You think you can patch me through to him? I'll try. Hold on. This is Commander Connell. तो हमारे पास देखो हमको ये रशिया ये यूएस ठीक है हमें ये तीन task force on the लेने ground. We're engaging the Russian ground forces. बहुत sexy Unless game you notepads want to get caught in the crossfire, I suggest you join us. We got a choice? When? Sending coordinates. See you on the field. So much for stopping a war. Let's go. तो ग्राफिक्स वगैरह बहुत यूनिक है अच्छे गेम. Monitoring your advance, notepads. Take that objective and show the enemy no quarter. Let's go. Okay, squads. Strategy's simple. Capture your objectives, take control of the sectors, and repel the enemy. Remember your training. Our troops are engaging at Charlie 1. Locate and capture objectives. This battle's not over yet. Four-way point! Let's move! Most sectors are now under our control. God damn it! Okay. अभी हमें guys सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो लेने हैं. Bravo 1 under assault by Allied forces. Intel shows no hostiles present. Notepads, you are free to move on that objective. Take that position! That's it! Great work! The sector is now under our control. What? You notepads don't disappoint. Okay. अब ए भी जाना पड़ेगा. मुझे लग रहा है बंदे गिरे गिरे. What? भाई ये क्या मार रहा है? What the fuck? मेरे को क्या मारा है इन्होंने? Bravo 1 is under attack. मैं टैंक चलाएगा रे बाबा. Let's go. One of our objectives is under attack. चलो दूसरे पे चलते. मारो 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 हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर. We're spending serious resources to stay in this. Fuck.
हमारा ही होके रहेगा. Sector Alpha has been secured. Fort. Enemies disorganized. Need to consolidate. वो मार दिया. हे मास्टरनी कैसे? We don't stop them, they'll take every sector. अरे भाई उठा ले, कोई है ही नहीं भैंस के यहाँ इधर. तो बात जाना ही पड़ेगा मेरे को घर पे वापस. गाड़ी चाहिए. अरे 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 They're attacking one of our objectives. अरे रेनू मलेश. गलत. We've captured all of Sector Charlie. Our forces control most sectors. जाना ही पड़ेगा. कोई हेल्प करने नहीं आता साला. Enemy neutralized. One down. Reloading. Cover me. LOL. What? Oh भाई. कहाँ गया वो? What the fuck, मैंने गलत फेंक दिया. They're hurting. Hostile forces are at half strength. Fuck All of our me. objectives have been attacked. We've taken control of Sector Bravo. Sector secure. Get ready to hold them. Shit यार. वो सारे सेक्टर्स हमारे हैं ना? मारो बेंच. भाई मेरी ये गन को ये सिंगल पे कैसे चली गई? व्हाट? मैंने तो गन ही नहीं उठाई यार. Objective lost. We need to retake it. ओ ये हाँ ये कौन है? They've captured But Sector both of them. Alpha.
कब लाए थे ये? Allied forces have spent substantial resources. If we don't stop them, they'll take every sector. Take position over there. Do not leave the combat area or you will be extracted from the battle. भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ना वो गन का कहाँ गया? भाई वो गन दे दे। Fuck! नहीं! Sector Charlie is under our control. Most sectors are now under our control. पापा से मस्ती। भाई मस्ती मजाक हो गया। मस्ती मजाक हो गया। Move to my mark. Objective locked. We'll need to retake it. They've captured Sector Bravo. भाई If we don't stop them, they'll take every sector. भाई मैं बहुत खत्म हो जाऊंगा। मैं खत्म हो जाऊंगा। Allied troops targeting Bravo 1. कहाँ पर है? अरे किससे लड़ रहे हो लोग? हेलो? Allied forces have taken Sector Bravo. One of our objectives is under attack. Our forces control most sectors. भाई एमओ ही नहीं है। All right, let's keep that up. भैया एमओ दे दो मेनू। कहीं से एमओ हेलो। मर गया रे। बचाओ। देखो मैं मारू एक। I'm reloading. One of our objectives is under attack.
Let's go. कौन मारा रे? मैं मर जाऊंगा रे ऐसे तो। मर गया। बच गया। They take more losses and they're finished. टैंक से पंगे नहीं लेने चाहिए तो मुझे ऐसा लग रहा है टैंक से पंगे नहीं चाहिए। जीत गए। But there's more to be done. You know Patch did a great job out there. Let's get you home as promised. चलो ये तो जीत गया बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि रीलोड क्या कि एमो कहाँ से लिया जाए। Install is progress. The game is currently being installed. You can continue playing Conquest against AI. While the game is installing, you will be notified once the installation is complete. Oh my god, installation में time लगेगा. Oh, okay. ये तो click ही नहीं हो रहा है guys. What is this behavior? Time पड़ा है यार ये तो अभी. ओहो. Okay. Okay, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अटक गया है क्योंकि शिट बॉय। तो गाइस ये एक्चुअली आज आपको मैंने प्रोमो दे दिया है वक्चौदी का क्योंकि ये गेम अभी इंस्टॉल हो रही है। मैंने दिन में लगाई थी तब ये दिखा रहा था फुली इंस्टॉल्ड, बट दिस गेम इज वेरी गुड यार, दिस इज गुड। Okay. कौन कौन सी गेम कितने रुपए की कर दी इन्होंने? 100 रुपए की ये कर दी है गाइस, मोस्ट वांटेड। हॉट परसूट 400 रुपए की। प्लांट वर्सेस zombies गार्डन वॉर्स 2 149.85 रुपीस। ओके सही है यार। अंथम 200 रुपए की, 300 रुपए की। जड़ाएं 800 रुपए की। बैटलफ्रंट 2 200 रुपए की। ओके ओके सही लगा यार मुझे गेम। और भाई देखो इनका श्रेय जाता है हमारे आयुष भाई को। गेम तो बहुत सेक्सी है बट ये इंस्टॉल हो रही है अभी। सो आई थिंक सेक्सी लेडी इज ऑन द फ्लोर राइट नाउ एंड शी इज बिकमिंग एट अ मोर। जादू से जादू किया रे राइट। देखो ये गेम अपन अभी डिटेल में इसलिए नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि यार ये इंस्टॉल नहीं हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से इंस्टॉल करके इसका कुछ अलग दिखता है लाइक गेम। व्हाट वी प्लेड इज एक्चुअली जस्ट 5v5 अगेंस्ट दोस पीपल। आई थिंक पूरा गेम को इंस्टॉल होना ही पड़ेगा। लाइक उसमें आ रहा था प्लेएबल फ्रॉम लाइक 40% और 30% एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई कैन नॉट प्ले दिस गेम फुली। सॉरी।
जाके सोई रही। Connecting to the online services. Connecting to online services. पता नहीं कब तक कनेक्ट करेगा बट ये कनेक्ट कर रहा है लाइक लिटरली. Enable menu disable. भाई ये तो सब हो गया ना, बार बार क्यों आता है? अच्छा ये वापस से वही खिलाएगा क्या Listen up. मुझे? I only have time to explain this. No, I don't want to, I don't want to try to explain that right now. फिर तो इसको इंस्टॉल होने दो यार, क्योंकि अब ये इंस्टॉल होगा तभी आके. ये क्या दिक्कत है यार? स्टोरी मोड लगाओ, मस्त मजा आएगा ब्रो. स्टोरी मोड लगेगा आफ्टर इट गेट फुली इंस्टॉल्ड, जिसमें अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि तुम देख सकते हो 1 hour 30 minutes का टाइम ऑलमोस्ट लगेगा. 1 hour नहीं, एक सेकेंड, 1 hour का लगेगा, 1 घंटे का लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा. और यानी अपने को 1 घंटा कुछ गेम खेलना पड़ेगा ताकि ये इंस्टॉल हो सके. देख रहे हो ये? आर यू सीइंग दिस? अभी मैं पूरी स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखो. अपने को 1 घंटा क्या मीम रिएक्शन, यार मीम रिएक्शन में मजा आता है क्या यार? मेरे को ऐसा कोई हंसी वैसी आती नहीं मीम में यार. मैं सोचा था कुछ और गेम खेलते हैं ना. आई हैव अ क्वाइट अ लिस्ट ऑफ गेम्स. रुको एक सेकेंड, रुको. देखो मैं ना बैकअप हमेशा तैयार रखता हूँ. देखो आई हैव अ गेम, ठीक है. लेट्स सी इफ इट गोज प्रॉपर्ली. ओह ये बेबी लेट्स गो. डार्क पिक्चर एंथोलॉजी खेलें, ज़्यादा सही रहेगा. उसको इंस्टॉल होने देते हैं. I have a game बैकअप रेडी फॉर दैट. मुझे पता है अगर कभी ना कोई मुश्किल आ जाए ना, तो आई हैव अ गेम, क्योंकि मुझे लिटरली वैलोरेंट अभी नहीं खेलना. लाइक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्लेइंग वैलोरेंट. सीएसगो है क्या? नहीं ब्रो, सीएसगो तो नहीं है यार. मुझे वैसे अभी कोई गेम नहीं खेलना है जो लाइक ऐसे प्लांट करो और वो करो और ये करो और ओ माय गॉड फेटल एरर आ चुका है. लेट्स गो. ये गेम क्रैश हो गई है. वेरी गुड, दैट इज सो गुड. रुको एक सेकेंड, फेटल एरर आ गया गाइस. फेटल लाइक नॉट नेटल, इट्स फेटल एरर. ओ माय गॉड. रुको. नहीं है एक रेडी है मेरे पे गेम. लेट्स सी इफ इट रन्स. ठीक है. एंड ऑल्सो अभी मैं वैसे गेम्स नहीं खेलना चाह रहा यार. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को वैलोरेंट भी ओपन करने का मन नहीं है. हाँ चल गई. देखो गाइस आ जाओ, ये खेलते हैं. तब तक भूत के गेम खेलते हैं 1-1.5 घंटा. 1 घंटे में फिर वो इंस्टॉल हो जाएगी, फिर अपन वो वाली कंटिन्यू करेंगे गेम. बैटलफील्ड हाउस ऑफ एशेस. मुझे पता है मैंने इसको जहाँ छोड़ा था वहीं से करेंगे अपन, ठीक है. नहीं कर सकते क्योंकि ओ माय गॉड फक मी व्हाट. ये पूरा शुरुआत से चलेगा. ओ माय हो गया कांड. फेटल एरर नॉट नेटल एरर. बच्चे का एरर.
ओके ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है आई गेस, क्योंकि मुझे पूरा गेम फिर से नहीं खेलना। What the fuck? Literally no continuation of story। भाई मैंने लिटरली कंप्यूटर फॉर्मेट क्या मारा, मेरी जिंदगी फॉर्मेट हो गई है। I'm telling you guys, I am just quitting it right now. I have one more game. Let's see कि उसका कहीं ऐसा ना हो कोई कांड। I think नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं गाइस। ठीक है, देख लेते हैं। ए भाई ये तो बड़ी चोट हो गई लाइफ में है। भाई नो वे, नो 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 फकिंग वे, मुझे इसमें भी गेम शुरू करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया गाइस? ये इसमें कितना टाइम है भैया? 1 घंटा 18 मिनट। तेरे भाई हंसो मत यार, देखो बंदे के साथ चोट हो रही है, तुम हंस रहे हो। What the fuck is that? सारे गेम्स की फाइल डिलीट हो गई। हाँ मुझे लग रहा है सेव फाइल डिलीट हो गई। क्या करे भाई सारे। ये गाइस ऐसा क्यों है कि मेरे साथ ही दुनिया की सारी चोटें होनी है? सीरियसली यार, सीरियसली लाइक आई वाज इनटू कि ठीक है कोई बात नहीं। Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. चलो कुछ देर यही खेलेंगे गाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, चोट जिंदगी में मेरे साथ ही हो रही है।
लुकिंग इंटरेस्टिंग ब्रो, गेम अच्छी है बट मैं इसका इनिशियल पार्ट खेल चुका हूँ. अब जो मैं इनिशियल पार्ट खेल रखा है ना, वो मुझे वापस खेलने में जोर आता है. लाइक टाइम कम होता है ना, इसीलिए. बाकी गेम अच्छी है, गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, गेम काफी अच्छी है. लाइक बट फिर भी एक व्हाट द फक. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. चलो. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. चलो देखते हैं अपन कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं 1 घंटे में. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. चलो. क्या हो गया? Any person speed run. Hey, Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Foie क्या होता है रे, by the way? अच्छा ये यहाँ. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. No. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening.
Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. आ गए. Are you able to help me? Friend, you're lucky there is something I know about this. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. चलो. देखो यहाँ तक मैंने किया हुआ है यार, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. चलो. आगे भी ये स्पीड रन पूरा कर रहा हूँ मैं, पता है. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner?
केनून है इसका. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. आज दिल टूट गया मेरा. क्या हुआ क्या राजू भाई बताओ. हमें हमसे शेयर करो. क्या पता हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें. होते रहता है लेकिन हर बार नहीं मानना रे बाबा. हार नहीं मानना रे बाबा. सही बात है. हार बिल्कुल नहीं मानना. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. क्या हुआ क्या? अरे हुआ barely क्या राजू भाई? conscious. क्या हो गया? ऐसे ये दिल विल The feebleness of women. ऐसी बातें कर रहे हो यार आप तो. Really, Sherry? Poor thing. मैं मुझे ये सही बताऊं ये वाला नहीं खेलना. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. दिल broken. अरे कोई बात नहीं. क्या हो गया?
The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. कोई नहीं What else does a real gentleman need? OG हो. ये OG का मतलब क्या होता है टेर भाई? मुझे OG बताओ, समझाओ ना यार. Real OG क्या होता है? सब चीजें होती हैं एक बुरा एक्सपीरियंस समझ के लात मार दो. लॉल. ये लात मारने वाला अच्छा कंसेप्ट है भाई. There are light traces of rouge on the edge of this OG wine का मतलब glass. क्या होता है यार? खुश रहो, मास्टर का स्ट्रीम है ना, उसकी आवाज किसी गर्लफ्रेंड से कम है क्या? हाय. ये हरकतें करके ही तो तुम मेरा नाम डुबा रहे हो सब लोग हैं गाइस. फिर किसी को मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा ओह माय गॉड मास्टर इज सो क्यूट, सो एक और अपने को कुछ किलू चाहिए. किलू अपने को एक क्लू और कोई चाहिए. अरे ओजी नहीं, ओरिजिनल गैंगस्टर. अच्छा, ओरिजिनल गैंगस्टर भैया. इससे मुझे लग गया था ये. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. अरे गए क्या? All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... ये क्या कर रहा है? No. What a shame.
Our witness was a nosy maid. Find your princess. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. चलो ये थोड़ा सा बोरिंग है भाई मेरे को सीरियसली मैंने बुरा मत लगाओ आपको चीयर अप करने का ट्राई करो सही बात है ये कितनी देर में होने वाला है टाइम है यार अभी भी 10 GB बाकी है मैं सब बोर हो रहा हूँ Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sheriff. चलो सही कह रहे हो कुछ देखते हैं इधर मैच देखते हैं अगर कोई वीसीटी टाइप का कोई मैच आ रहा होगा तो वो देखते हैं यार को होल्ड करो चलो वैलोरेंट के फाइनल्स देखते हैं गाइस तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा आई गेस या 1 घंटा रिमेनिंग आई डोंट नो Meet Grammarly Business. शट अप चलो वैलोरेंट देखते हैं गाइस थोड़ा वैलोरेंट के मैचेस देखते हैं प्रो प्लेयर्स कैसे खेलते हैं लाइक सीरियसली यहाँ से to which we had the pleasure to cast, Riv. That game actually मैंने could have देखा gone नहीं यार ये फाइनल्स Fnatic's way. And then one thing you have to point out about those matches, Dan, we talked about it. The pistol rounds at the beginning of each map for Icebox and Haven went 1-1. It did not go 2-0 for either team. The bonuses weren't there to be used. And those maps ended up 13-11 and 13-10.
So if a team here can solidify those pistol rounds, it may tell a different story. Looking at Fnatic for pistol rounds there. बढ़िया कर लेते हैं, but इसका मतलब यहाँ से नेट की स्पीड जाएगी और कुछ नहीं है. They seem to drop them. Durka goes for the Marshall. They can still make magic happen, but from the pistol rounds, if Fnatic grabs those, I think we could see a much different game from them. Boaster says they're momentum-based. It's going to have to start at the beginning, you know? Yeah, completely agree with that one too. You know, it is going to be, I think, a difficulty playing against Sentinels just because Sentinels do have that upper bracket run advantage in terms of seeing more rounds of their opponent. This is something that Sean gets into the prime gaming agent select. Okay, देखो guys, Sentinels में देखो Shazam है, Tens raise बना हुआ है, Shazam Jet लिया हुआ है, Daper जो है इसने Cypher लिया हुआ है, Sickness Rage ली हुई है और Zombs ने Astra. और I think same team है, नहीं, Raze की जगह पर Viper है Mystic पे. और ये है टीम फैनेटिक. तो सेंटिनल्स और फैनेटिक के बीच में लास्ट मैच हुआ था. ओह लेट्स गो. मजा आएगा. मास्टर आवाज out of the gate here, Riv, is there anything that strikes you? ऐसा है क्या? Creds is bringing out the raise on split. Oh my word, the last 8. चलो आवाज कम रखते हैं इसकी. सही कह रहे हो आप. चलो देखते हैं, मजा आएगा यार. किसी ने रेना नहीं ली तो देखो तुम, अगर तुम देखो प्रो गेम्स में ना रेना नहीं है किसी पे भी. As Fnatic goes in, they are not running the triple duelist comp. They actually go for more util and a single duelist. So this is a complete switch up. It's what we expected coming in. The plays through challengers 2-1 here were, I think, 10 for Sentinels with a very high win rate and only 3 for Fnatic. So you can see why Sentinels want to target split. Yes, there was the boot camp by Fnatic, but Sentinels and everybody hasn't been able to see what that boot camp was able to do. They feel like they can get the aggression and the advantage on split to start, with this being their pick. And here we are, ladies and gents. Sentinels versus Fnatic here. Map 1 of the best of 5 grand finals here at Masters 2 Reykjavik. And it is starting. Sentinels, what have they got to show us here? They're going to be on the attack, taking the initiative. But Fnatic, you may think that they're actually on the attack here because they're making a quick move, taking that A main control right as Sentinels work their way through mid. Spikes down here, so it's going to be a touch and go play. Picked up on the other side by Dapper as he comes around to see what happens. Beautiful tripwire by Magnus. हाँ bro, Tens Jet खेलता है. But आज अभी वो कुछ और खेल रहा है. आज रेस खेल रहा है. Okay, Sentinels में Shazam जा चुका है, but सामने Fnatic में 2 ही बंदे बचे हैं. अच्छा, Sentinels plant कर रहे हैं. Ooh, nice one. It's going to be difficult to find those. It's now just Doma with the Ghost. Sentinels will be toying with Durka. Nice. He's going to finish things off. The opening pistol round will be won by Sentinels. Double peek there real quick to get the finishing kill. Sentinels doing a quick top side strat up to the B heaven area, straight through the gut, up mid. And then it was a late garage hit. It kind of it looked like they allowed Fnatic to think nothing else was happening there, and then you saw Magnum dirt. Dapper come out as they picked Save out that Booster. Read, delay, Mistake. and then hit. Looks like they wanted Joma. time, and Fnatic almost coming up really nice there on the retake as they dove back into the site. We'll see. Ooh, ये वाला कैमरा बच्चे यहाँ से सीखते हैं, मैं समझ गया. Durka is not going for the Marshall, but then again, Dan, you mess up your economy on split, and it starts to go very. Ooh, wow. Yeah, once again, we're getting this focus from Fnatic on the A main, and this is something I think we can think about going into their defense, that they pressure this so much. Sentinels seem naturally also to just hold towards mid and B main. Oh, nice one, yaar. Even though they're playing an anti-eco right now. Oh, gaya. I think it will be something to focus. Shazam ने 2 ले लिए. Nice. Will be Nice. picked off one by one here. They are just on pistols, and they did manage to gain the orb on A main, so that's a small victory. Frag would be nice too. Yeah, making this round a little bit safer for themselves as Dapper is able to see the rotation coming from more than one. They can assume that's where B Heaven is going to get the action, as Durka's just waiting for some frags to come through. They would love to be able to knock some armor off, or at least get those guns dropped out of the hands of Sentinels, but it will not happen. Tens picks up a 4K, an extra 800 credits for him.
and they're heading into round 3 now. So we'll see what Fnatic can do to pick अच्छा up खेल रहे हैं यार. Sentinels जीत गए क्या? need to play aggressive and look for that info, or if they go for a info denial game here to start reading what Sentinels wants to do. That's where I think Boaster becomes the most effective, is when it slows down a little bit and they can start making those mid-round adaptations. I think that's why we see Fnatic so good on attack on most maps, is because of their mid-round adaptations. When you're on defense, you're made to react to whatever your attackers are doing. You don't really have a chance to adapt, you're just doing. So here, we'll see what they can do, Dan. Guns to guns. Yeah, and you can see off the bat, Fnatic wanted to take control of B main. They got denied by Sentinels out of utility, but they're still trying to force the issue. Beautiful swing from Doma, takes down Sig, and that's a huge win early on for Fnatic, as they now have that B main control. They'll give it up straight away, but that's largely because they have a 5v4 Nice one. टेंस जानवर है साला भाई. वो गेम बहुत ज्यादा खेलता है यार, बहुत ज्यादा खेलता है यार ये बंदा. पूरे पूरे दिन मतलब ऐसे लाइक इनमें लगे रहते हैं ना यार. ये तो प्रो प्लेयर्स हैं, इनका तो मैप कंट्रोल, गेम कंट्रोल सब चलता रहता है. Trailblazer out towards mid, and they hold it off. I love the positioning as well of all the Astra utility coming in from the side of Boaster, just making ये लोग तो वापस VCT की तैयारियों में लग गए ना. VCT होने वाले हैं. Right on the zip line coming through vents. They can quickly either concuss that or smoke it out and give a pause to Sentinel's strategy. Here we go up towards heaven. It looks like it's going to be the execute on B. Shazam able to take down Mystic. Magnum though below might be able to get a few here. Good position, Tens with the stab, causing problems. And that, well, Magnum still gets 2 out of that, so still a good advantage here for Fnatic in the 3v2. Time is really on Sentinels now. They've got to plant the spike. You can see Shazam's going to give up that spike there, leaving it up to Dapper. 2 more to find though, and 10 seconds to get the spike. He doesn't have time to really mess around here. Has to push the issue quite quickly. He's going to just drop or swap out the weapon so he gets more ammo, but he's not in a winnable. Ah, nice one, Fnatic. Played it very well. And there we go. Fnatic pick up their first round. That's huge for Fnatic, because they are, as they said themselves, a momentum-based team, so be able to start swinging early is going to help them out a lot here. I think this also gives a little bit of agency to what Durko will be able to do if he can start building money, play a little bit more rambunctious around the map, as his style loves it, and start picking up the first bloods that Fnatic knows he can be grabbing. Sometimes getting the first deaths in there, we saw it being a problem for the first Sentinels versus Fnatic matchup, but Durka still an opening for the team to continue to work these rounds. It'd be good to have him up and running, and Tens puts that to sleep right away coming into round 4. Powerful maneuvers here from Tens, taking control towards upper straight away. Sentinels, though, you know, they are defaulting here, so this is just extreme amounts of pressure on the defense. You can see on the mini-map the reverse through here for Fnatic. They have to respect this, and because of that, Shazam able to get a backstab, sneaking through ropes. And Tens is going to try to capitalize here, pulls out the showstopper, looking for those defenders. Oh, he's actually missed him, and that might give an opportunity here for Fnatic to hold on to this A site. They still have Mystic in position on elbow. Sentinels getting a little too crazy there, just reacting off of thinking they had Fnatic dead to rights. Fnatic never dead to rights. You have to realize that. They're here for a reason, and they're ready to play. Trying to pull this one back into their favor now. Magnum with the Spectre versus 2. Fuck! Such great movement there from both Sentinels players. Now, that really does put Mystic in a difficult position. 30 seconds left. Fnatic, or rather, sorry, Sentinels will make that movement towards that B site. And there's not a lot of great options here for Mystic. In fact, I don't think there's any options you could describe as great for Mystic at the moment. And Sentinels are just going to double up at the back of the site, creating a double elevation on the peak. So this double peak should be somewhat impossible for Mystic to deal with. Oh. Hot foot for Zoms, just a tiny bit. He felt it for a second. This is going to be tough. Mystic's going to have a hell of a transfer here. If he does hit it, he might have the angle. Oh, that was very good, man. That was very good. They were waiting, and it's going to be 3-1 now for Sentinels. Bit of a scrappy round there as they kind of let loose, and Fnatic noticed that. बहुत प्यारा था यार. They backed themselves out, knowing what would be next was that Ray's ultimate. So really heady play by Boaster to just instantly make distance after. They were like, whoa, wait, this is all a little too crazy. And
And it's Valorant's such a fast game as well that we haven't really had an opportunity to talk about the reason why Ten's picking Raze is such an awesome pick for a map like Split. And there won't be any time right now either because we have the initial setup here on game from both teams. And that Ice Orb, it's so high value in the sense of that 100 credits just allows you to just prevent the other team from making any aggressive moves. So you just win that control straight away. Crossfire onto B garage. Spike still playing slow for Sentinels here. The chess game still begins before that execution between Boaster and Shazam here. The minds bringing these two teams to grand finals along with the star power that is the rest of both of these rosters. So Bladestorm is up. We have Rez there for Sick and 3 ultimates on the side of Fanatics for a little bit of defense here to push them out. I wonder if Mystic decides to fire one off or they're just going to see if the round becomes worth enough to commit those ultimates. Oh, on the bait there, they're actually going to try to punish Shazam, but they go into the firing squad of Sentinels here. That's pretty awesome. Fnatic just massively baited there for the Prime Gaming Flawless for Sentinels. I think that was the round of the entire tournament with the least vision kills. There's just a whole lot of spamming through that smoke there. It works though. Kind of one of those rounds where you play against the opponent just face first. And honestly, if one person was in mid there, they take it down, they get a Phantom, and they run with it. But it was a family photo from Sentinels. They even know, like, I spammed 3. I used up all my luck, Dan. Well, I'm curious for 6. बस एक बार कोई भी लैन इवेंट खेलना है मास्टर जस्ट वन टाइम एनी गेम यार आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट पहले मैं चाहता हूँ कि मैं और हायर रैंक्स पे आ जाऊँ एक बार मतलब जैसे थोड़ा इमॉर्टल रेडिएंट आ जाए फिर किसी टीम के साथ जुड़ के खेलने का सोचेंगे यार उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ता है यार टेरर भाई मतलब इसके लिए ना आपको बहुत कुत्ती टाइम देनी पड़ती है गेम के लिए लाइक अगर आप देखो ना तो मैं आपको बताता हूँ ब्रो बंदे डिमांड करते हैं ना जैसे जो आप जैसे मान लो किसी ई स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हो ठीक है तो किसी भी ई स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़ रहे हो वो टाइम बहुत डिमांड करते हैं लाइक आपसे 5-5 घंटे खेलो उनके साथ है ना उनकी टीम के साथ 5-5 6-6 घंटे प्रैक्टिस करो ठीक है कॉम्स की प्रैक्टिस करो मैप की प्रैक्टिस करो एम प्रैक्टिस करो लाइक there are thousands of practice time which you have to invest in तो यार इतना टाइम इन्वेस्ट करना यार देखो मेरे लिए यूँ पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल कुछ काम भी होता है समझ लो लाइक आई डू गेमिंग फॉर फन राइट चैनल इज़ एक्चुअली फॉर फन ठीक है चैनल जो है गेमिंग जो है ये सब एक फ़न के लिए था इट वॉज नेवर इनटू के कोई बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे जाना है और बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ऐसे प्रूव करना है या किसी बड़े से इवेंट में जाना है ठीक है मौका मिल गया छोटे मोटे तरीके से तो बहुत अच्छी बात है ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बैठा रहूँगा और कोई सामने से इवेंट पे आके मुझे मौका देगा ऑफकोर्स ये बात है मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ऑफकोर्स ट्राई करता हूँ कुछ जैसे ई स्पोर्ट्स वालों के साथ जुड़ता हूँ बातें करता हूँ है ना उनकी टीम में खेलने की कोशिश करता हूँ फिर उनको अपना गेम प्ले दिखाता हूँ किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है वाली बात है ठीक है ऑफकोर्स ये बात है मैं टीम प्लेयर तो नहीं हूँ क्योंकि मैं सोलो बहुत ज़्यादा खेलता हूँ है ना टीम मिलेगी तो उनके साथ खेलना जब मैं उनको बताऊँगा मैं ऐसे खेलता हूँ तो वो मेरे गेम को समझेंगे मैं उनके गेम को समझूंगा फिर खेलेंगे बट यार टेरर भाई इसमें ना टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत है यार समझ रहे हो टाइम इन्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा इसमें टाइम इन्वेस्ट करो रिसोर्सेज इन्वेस्ट करो आज जो डायमंड के ऊपर बंदे बैठे हुए इमॉर्टल वगैरह वो सब 240 हर्ट्स 360 हर्ट्स मॉनिटर पे खेलते हैं ठीक है मतलब सब बढ़िया बढ़िया मॉनिटर लेके बैठे हुए हैं ठीक है बढ़िया माउस महंगे माउस 2-3 हज़ार के हाइपर आयन फ्यूरी वाले या कोई वाइपर का लेके बैठा है कोई किसका लेके बैठा है टोबो का लेके बैठा है ठीक है ना बढ़िया उनके पास पैड्स हैं है ना माउस पैड बढ़िया एकदम फुल कवर्ड उनके पास प्रॉपर सेटअप है पीसी भी अच्छा हार्डवेयर वाला 2060 है या 3060 है 3080 है ऐसे लेके बैठे हैं तो जो इतना खर्चा करने के बाद अगर इमॉर्टल वगैरह है और तो उसमें वो टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है तब तो यार देखो उसको ज़्यादा मैं कहता हूँ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ऐसे वीसीटी और बड़े इवेंट्स खेलने का लैन इवेंट्स खेलने का यार मेरे लायक इवेंट शायद से अभी नहीं है अगर है भी तो एज अ सपोर्टिव आई कैन प्ले वेरी वेल ठीक है ना बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं सीख सकता हूँ और मैं टीम का सपोर्टिव बन सकता हूँ बट ऑल आई कैन से इज़ लाइक एक प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करना अपने आप को इमॉर्टल तक या रेडिएंट तक एंड देन उसके बाद अच्छा सेटअप लेना चीज़ों को इन्वेस्ट करना इट्स एक्चुअली नॉट क्वाइट अ थिंग ऑफ माइंड राइट नाउ
ये मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी के लिए यार आई थिंक आई एम बेटर दिस वे। लाइक अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार जब तक कोई टीम मुझे मिल नहीं जाती, जैसे अभी जो मेरे बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक गेम प्ले पे अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कितने कम रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा सही खेल रहा हूँ। लाइक आई एम लिटरली डायमंड 2 इन लाइक व्हाट 9 गेम्स के अंदर मैं डायमंड 2 हो गया था। एंड मैं एम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सोलो क्यों करता हूँ, है ना, मेरे इतने ज़्यादा लोग नोन है, दैट काइंड ऑफ थिंग यार। इसमें बहुत टाइम लगता है यार। और टेरर भाई मैं बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है बोलना कि आप एक बहुत प्रो प्लेयर हो इस गेम के, क्योंकि इस गेम में बहुत बकचोदी है, बहुत ज़्यादा बकचोदी है। गेम बहुत अच्छी है, बट ये है मानना पड़ेगा, गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है, गेम बड़ी एडवेंचरस है, मज़ा आता है खेलने में। और लाइक चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी, कुछ कुछ दिमाग बहुत अच्छा लगता है लोगों का, एम अच्छा लगता है, वो है। कभी करेंगे यार, कभी करेंगे। कभी का मतलब है यार, देखो रिसेंट टाइम में तो मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि ग्राफिक कार्ड मेरा बिल्कुल ही डेड होने पे आ रहा है। डेड तो नहीं होने पे आ रहा है, बट देख यार एज कर रहा है यार वो, और मेरे को डर लग रहा है उसके लिए, सही में डर लग रहा है। आई कैन नॉट से मच बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि किसी तरह अपन कुछ तो बड़ा ऐसे इवेंट में सपोर्ट ले सके, ऐसे पार्ट ले सके। बाकी तो यार ऊपर वाला जानता है। बाकी कितना टाइम रह गया है? अरे भाई अभी भी बहुत टाइम है यार। लाइक आई डोंट वांट टू सेट लाइक दिस। 11 बज चुकी है यार। क्या कहते हो गाइस, आज के लिए इतना ही रखें क्या? लाइक मेरे को लिटरली वैलोरेंट नहीं खेलना मन कर रहा है, फिर अब वैलोरेंट ही ऑन कर लूँ, बट मुझे खेलना नहीं भी है। लाइक ऐसा नया लोगे तो गिव अवे कर देना, हम खरीद लेंगे। ब्रो खरीदने का क्या, गिव अवे कर दूंगा यार मैं। अगर मैं नया ग्राफिक कार्ड अगर मुझे मिल जाता है, मैंने अप्लाई किया हुआ है वैसे, है ना, एक जगह पे, तो अगर मुझे मिल जाता है ब्रो तो ऑफ कोर्स मैं गिव अवे कर ही दूंगा यार, क्योंकि किसी के काम ही आएगा, जिसके पास नहीं है उसके भी काम ही आएगा यार, ऑफ कोर्स यार टेरर भाई, है ना। कल खेलते हैं, हाँ आज के दिन रहने दो, कल खेलते हैं। वही यार, वही मेरे को लग रहा है आज के दिन रहने देना चाहिए मुझे। ये ट्रॉफी है गाइस, ये ट्रॉफी है, जो बंदा जीतेगा ना उसको मिलेगी। ये लेट्स गो, यही है ना ट्रॉफी? ट्रॉफी तो यही है आई गेस, वीसीटी की। हाँ ये ट्रॉफी है बिल्कुल, दिस इज द वीसीटी ट्रॉफी। ओह ये लेट्स गो। टेक्निकल पॉज आ रखा है गाइस इसमें। विनर देख लो, विनर देखूं क्या? विनर सेंटिनल्स रहे आई गेस। हाँ सेंटिनल्स रहे ना, सेंटिनल्स जीत गए। वाह क्या सतरंगी बाल करवाए यार इसने। ऑफ कोर्स यार सेंटिनल्स को ही जीतना था, सेंटिनल्स अच्छा खेलते हैं यार। तो लास्ट मैच कौन सा था? हेवन। अरे सही है। अरे ये सतरंगी भाई इधर सेंटिनल जॉर्ड है भाई, सही बात है भाई, सेंटिनल जॉर्ड है भाई, अच्छा खेलते हैं यार। अच्छा अच्छी बात है मैन, आई एम वेरी इनटू के, सही है, सही खेलते मिलते करते बंदे। आज खेलने का मन था यार मेरे को, वो लिटरली यार बैटलफील्ड 2042 मैंने दिन में देखा था तब यार, वो इंस्टॉल हो चुका था, तो मुझे लगा ठीक है हो गया है। फिर मैं काम पे लग गया अपने, मैं शाम को फ्री हुआ था, तब मैंने मास्टरनी को बोला कि एक थंबनेल बना दो आप। उन्होंने थंबनेल बनाया। वैसे मैं ये मैच देखने वाला हूँ यार, लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये लोग एंट्रीज वगैरह कैसे लेते हैं, है ना। मास्टर जी आप भी अपने बालों को ऐसे ही कलर करा दो। हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ मास्टर ने, बिल्कुल ऐसे कलर करा के, मैं सतरंगी बाल कलर करा के
मैं सड़क पे आ जाता हूँ और रोड पे जाके मैं टिकटॉक और वो बनाता हूँ, क्या बोलते हैं दिस थिंग, रील्स बनाना शुरू कर देता हूँ, है ना? सही बात है ना? मैं बालों का ऐसे लंबा लंबा सतरंगी करा देता हूँ एंड उसके बाद मैं टिकटॉक और ये बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुजरा देखने में किसको मज़ा नहीं आता है, और सतरंगी बाल वाले मुजरे तो लोग बहुत देखते हैं, है ना? बिल्कुल, हाँ मास्टर, बिल्कुल यही यही काम कर रह गया मेरे पास। फिर मैं उसको डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे, और यूट्यूब बनाऊंगा मैं, अपना यूट्यूब सर्विसेज बढ़ाऊंगा। हाँ, रील्स रील्स बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल यही काम रह गया मेरा। इसी पे मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? सतरंगी बाल वाला, रील्स वाला, ठीक है? कब चल रहे हो फिर सलून? बस आज ही चल रहा हूँ मैं। कल ही चले, कल ही चलो मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। ये देखा गाइस, सपोर्ट कितना आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे मुजरा और रील्स के चक्कर में लोग कितना यूट्यूब को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि मेरे मुजरे वाले बालों के लिए लोग सपोर्ट करता है, मुझे चूतिया बना रहे हैं, वह तो मैं हूँ भी। आई विल स्पॉन्सर पूरे 10 रुपीज़ का स्पॉन्सरशिप फ्रॉम मी। मतलब मैं अपने बाल कलर कराऊँ, उसी में पहले तो 100-150 रुपये लग जाएंगे, 200 रुपये, ठीक है? उसके बाद मुजरा करने के लिए फ़ोन खरीदूँ, क्योंकि फ़ोन है नहीं, तो उसमें 50,000 और, फिर मुजरा करके मैं डालूँगा, और उसके तुम कितने दोगे? 10 रुपये। मेरी बात सुनो, रहने दो। रील्स बना के यूट्यूब पे डालोगे? वाह मैम, रील्स मतलब ऐसे शॉर्ट्स बना के। लो स्पॉन्सर भी मिल गए, अब तो चलना ही पड़ेगा। चलो कल चलते हैं, कल ही अपन सतरंगी बाल करवाने चलते हैं, ठीक है? वील गो फॉर सतरंगी बाल। सतरंगी बोलते सब अपनी खोलते। ओह दैट वाज अ गुड शॉट। Ooh. Ooh. सेक्सी शॉट। क्या यार गाइस, क्या करें फिर यार? ये तो टाइम लेगा मैन, ये तो टाइम लेगा, आधा घंटा और लेगा यार। आधा घंटा तो मैं ऐसे बैठना नहीं चाह रहा हूँ यार। एक्सट्रैक्शन, रेबो सिक्स एक्सट्रैक्शन जिनशिन, ये आ रहा है मस्त गेम यार। आ तो ये रही है भैया गेम, सेक्सी वाली, सेक्सी लिया नहीं चलेगी क्योंकि मेरा नेट बहुत जगह यूज हो रहा है अभी। ठीक है भाई गाइस, अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना?